नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। जी, ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूं। आपका वीएम क्लासेस में स्वागत है। हमारी ईएसई मेंस की सीरीज कंटिन्यू चल रही थी। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास, जिसके ऊपर जो है हम अपनी कलाकृतियां उकेरते हैं। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अ 30 सेंटीमीटर डायामीटर अ 30 सेंटीमीटर diameter pipeline carries water at a volume carries water at a volume of 3.5 मीटर पर सेकेंड। 3.5 क्या है? मीटर है। if friction factor if friction factor f is equal to 0.028, first one, determine the roughness height A by assuming fully rough turbulent flow exists. Fully rough turbulent flow to exist. B, find the shear stress at the wall. Shear stress at the wall and at their C point. Find at a radial distance. Find at a radial distance of 5 centimeter from the axis the shear stress and the value. The shear stress and the value of of value of the velocity gradient. Now here nu is equal to 0.8 into 10 raised to power minus 6 meter square per second. Now we have to solve it down these equations for the rough turbulent flow. Here it is 1 by square root over the f is equal to 2 log r by k plus 1.75. Here we have the friction factor value 0.028 put on this frame, 2 times of log r by k plus 1.74. Here it comes, r by k is equal to 131.24. Now the value of k is equal to 131.24 डिवीजन में जाएगा अपर हैंड में 0.015।
So the value of K 1.14 mm. Easy. Now हमको सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना था shear velocity. U star is equal to, हमको याद है फॉर्मूला, tau naught by rho. So here put the value V bar F upon 8. Easy peasy, we have to get the value over here 207 पॉइंट आगे लगेगा जहाँ पे V bar जो है एवरेज वेलोसिटी है. So here we have put the ratio tau naught upon 1000 स्क्वायर रूट के अंदर 3.5 multiplied with the 0.0208 divided by 8. So finally wall shear stress value is to be 42.79, right, Pascal. Now at third frame, at radius is equal to 5 centimeter and R is equal to the thickness type of arrangement, capital R minus small r. Now shear stress varies linearly with the y 0 at the center and maximum at the wall. At that particular condition, we have the equation for this. Tau is equal to tau naught 1 minus y upon r. Sometimes we have to take instead of y del, right? So here we have tau naught is equal to 42.79 multiplied with 1 minus 0.1 upon 0.15. Value over the tau is equal to 14.26 Pascal. Now volume gradient, the Prandtl formula is used for volume gradient. The Prandtl formula is used. So here we have U by U star is equal to 5.75 log of y upon k plus 8.5. Now on this note we have U upon U star 2.5 log of y upon k plus 8.5 du upon dy U star 0.5 into k by y 1 upon k du by dy 2.5 into u star upon y. The final value we have to got is to be du by dy is equal to 2.5 multiply with 0.207 the early bird and 0.1. Final calculation must be given the value within the Kelsey 5.177. Easy. चलिए moving ahead for the next question that's coming on your screen dear साथियों. ये बोल रहा है क्वेश्चन में two parallel plates kept at 0.1 meter apart. Okay, parallel प्लेटें रखी हुई हैं. Two parallel plates kept 0.1 meter apart have laminar flow of oil between them, oil between them with a maximum velocity of with a maximum
velocity of 1.5 meter per second, calculate the discharge per meter width. Calculate the discharge per meter width per meter width. The shear stress at the plates. The shear stress at the plates. The difference in pressure in the difference in pressure in Pascal between 2 points 20 meter. Pascals between 2 points 20 meter apart. The velocity gradient at the plates. The velocity gradient at the plates and velocity at 0.02 meter from from the plates from the plates. The viscosity of oil. The viscosity of oil to be 2.453 Newton second per meter square, and B is the distance between both plates. ये वाली हमारे पास प्यारी सी कंडीशन है। चलिए देखते हैं एक बार आपके लिए, मैं कन्वीनियंस के लिए क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। Two parallel plates kept at 0.1 meter apart have laminar flow of oil between them with a maximum velocity of 1.5 meter per second. Calculate the discharge per meter width. The shear stress at the plate. The difference in pressure in Pascal between 2 points 20 meter apart. The velocity gradient at the plates and velocity at 0.02 meter from the plates. The viscosity of oil to be 2.453 Newton second per meter square. Be the distance between the both the plates. ये आपका कंडीशन है। इसी को सॉल्व इट डाउन करना है तो हमारे पास होता है साथियों द फ्लो बिटवीन द टू प्लेट्स। क्या होता है आपको पता है, आपका जो है रिलेशनशिप होता है एवरेज वेलोसिटी v बार इज इक्वल टू 2/3 ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर। नाउ 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 तो आपका जो है v बार एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/3 v मैक्स की वैल्यू 1.5 3/2, तो ओवरऑल उभरता हुआ जो सितारा निकलेगा 1 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, नाउ आफ्टर दिस we have to calculate it upon the discharge, which is v bar into width. So here 1 into 0.1 here gives the value 0.1 meter cube per second. now 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 v bar is equal to हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/12 म्यू इंटू width का स्क्वायर minus del p by del x in the condition of parallel plates, in the condition of parallel plates। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ है कि वैल्यू नहीं है ग्रेडियंट की,
del P over the del X is equal to 12 times mu V bar upon width का square. So put these values of 12 into 2.453 into 1 upon 0.1 square. So finally get the value 2943.6 Newton per meter square per meter. It's the value of the gradient. Then after that we have the wall shear stress tau naught, which is minus del P over the del X multiply with the width divided by 2. 2943.6 into 0.1 upon 2. Finally, wall shear stress 147.18 Pascal. We have to get the value over here. Now, the pressure difference, the pressure difference between टू प्लेट्स क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा हमारा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2943.6 into per unit length. So here it comes to be 2943.6 multiplied with 2058.872 kilo Pascal. Now moving the ground over here, shear stress at the plate due given by wall shear stress mu times of du by dy at y is equal to 0. So the value is equal to 1 upon 2 mu minus del p over the del x width minus y ka square. Here we have the value of y is equal to 0.02 from the on which end plate की ओर से plate की ओर से. Now so we have finally the value u is equal to 2 multiply with 2.2453 which is 2943.6 multiply with 0.1 into 0.2 minus 0.02 square. Finally, after that, the value over here u is equal to 0.96 meter per second. That's the final value we have. Now, there is to be next question moving ahead. चलिए, for the purpose of project, for the purpose of project calculation, the total cost of the total cost of moving a distance by pipeline, distance by pipeline at a steady flow rate, at a steady flow rate Q can be broken can be broken done into two items, done into two items. First the the manufacturer laying and maintenance, laying and
Maintenance of the pipeline are of the pipeline are of the pipeline are represented by cost C1, represented by cost C1, which is proportional to d cube. D is the diameter of pipe. Diameter of pipe. Now, the second item C2 depends depends solely upon the upon the energy required to pump the fluid. Required pump the fluid. A a preliminary design study for design study for a particular project. A particular project showed that showed that the total cost was the total cost was a minimum for T is equal to 600 millimeter if fuel prices are are increased by 150 percentage and and assuming only C2 is C2 is affected. Make a revised estimate. Make a revised estimate of the optimum pipe diameter of the optimum pipe diameter. ये पूरा क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। चलिए कन्वीनियंस के लिए एक बार आपके लिए जो है मैं पढ़ देता हूँ। For the purpose of project calculation, the total cost of moving of a fluid over a distance by a pipeline at a steady flow rate Q, okay, can be broken down into a two items. First, the manufacturer laying the maintenance of the pipeline are represented by cost C1, which is proportional to d cube, which is the diameter of the pipe. The second item C2 depends solely upon the energy required to pump the fluid. The preliminary
design study for particular project showed that the total cost was minimum for diameter 600 millimeter if fuel price are increased by 150% and assuming only C2 is affected, make a revised estimate of the optimum pipe diameter. So here we have, in this case, in this scenario particularly, we have the condition over there. Power is equal to rho G Q HF upon efficiency. Now, thereafter, we have the power is equal to rho times Q over the efficiency into FLQ square upon 12.1 into B raised to power 5. Now, P is a power is equal to rho G FL Q raised to power 3 12.1 into efficiency into e raised to power 5. Now अपने को अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है the amount of power required is directly related to cost and T2 cost is given by 1 by 3 raised to power 5 and manufacture जो cost है वो किसके प्रोपोर्शनल है मैन्युफैक्चर जो कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनल है डी क्यूब के और टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी अगर इस हिसाब से है आपका T2 जो है अमाउंट ऑफ पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस हिसाब से तो टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी T1 प्लस T2 कंबाइंड मिक्सचर और आपका जो है ये वैल्यूज टोटल पुट ऑन करेंगे तो हमारी जो है ना एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी कंडीशन आपकी दिखेगी विद द कांस्टेंट। अब जब जो है कभी भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है तो इसके लिए कॉस्ट क्या कर देते हैं कॉस्ट की विड भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए साथियों हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ओके। नाउ फर्दर मूव अहेड करते हैं हम तो with respect to d p times of 3d square minus 5 times of a upon d raised to power 6 is equal to 0. Now d raised to power 8 5 times of a upon 3 times of b value over t is equal to 5 times of a 3 times of b 1 upon 8. Now here the condition we have to take in a is equal to a1 b is equal to d1 and b is equal to constant for the initial initial fuel costing के हिसाब से तो हमारा कंडीशन हो जाएगा d1 8 times of square root of 5 a1 by 5a1 by 3b and d2 similar fashion में 8 square root of 5 times a2 upon 3b के लिए भी हम कंडीशन ले लेंगे a is equal to a2 and t2 फॉर न्यू पाइप। ठीक है ये वाली कंडीशंस आ गए। यहाँ से अगर मैं t2 देखता हूँ 1 plus 1 and half times of a so the value over the d2 is equal to 8 into 5 into अढ़ाई I a1 by 3 times of b easy। Now after this d2 is equal to d1 multiply with 8 square root of 2 and a half which gives the value 600 into 2.5 raised to power 1 upon 8 easy। The final value we have to get the d2
3 millimeter. Right. What a wonderful question. It is? Yes. Yes. It's a high commendable. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लगे हाथ. ये बोल रहा है वाटर फ्लोज, पानी बहने दो, upwards upwards through a vertical nozzle of vertical nozzle of inlet and outlet diameter, inlet and outlet diameter 0.5 and 0.25 meter respectively as shown. फिगर भी दिया हुआ है. The pressure at a section 1 is the pressure at a section 1 is 15 किलो पास्कल, 15 किलो पास्कल gauge, and the volume rate of flow, volume rate of flow is 0.5 meter cube per second. Find out the volume at a section, the volume at section 1 and 2, thereafter pressure at section 2, and the third condition is to be over here the total force acting on the wall, force acting on the wall of the nozzle of the nozzle. Now here we have to solve it down the premium question over here. चलिए बनाने की कोशिश करते हैं. बन नहीं रहा है बाबू. ओके.
डायमेंशनिंग कर देते हैं इस फिगर की। नाउ द डाया इज टू 0.5 0.5 meter, and here it is 0.25 meter. Now here it is the section 1 1. Here it is the section 2 2. Since is to be 2 meter, there is the W, and here dotted one, the control volume is the CV। ठीक है, तो हमारा इस तरह से कर। Now discharge is equal to 0.5 meter cube per second. D1 diameter is to be 0.5 meter, 2 is equal to 0.25 meter. D1 condition is to be over here Q upon A1 by E1. D1 is equal to 4Q upon pi times of D1 square, get the value 2.546. After that V2 is to be there, continuity applied, A1 V1 is equal to A2 V2. Now after that we have to calculate the value V2 10.185 meter per second. We have to calculate it upon that, right? Now further moving ahead, we have the equation of Bernoulli equations 1 and 2 के बीच में हम लगाते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। तो हियर इट इज P1 by rho g plus P1 square upon 2g plus Z1 is equal to P2 upon rho g plus P2 square by 2g plus Z2. Now put the values over here. 15 into 10 cube upon rho g is 9810 in the condition of water. 2.546 earlier we have to calculated the value over P1 का वैल्यू कैलकुलेट किए थे, तो गुणित 9.81 1962 भी लिख सकते हो, which is P2 upon rho g plus P2 की कंडीशन 10.185 square upon 2 into 9.81 and take the Z2 is equal to 2. तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रेशर हेड 0.2 का P2 बाई रो जी हमको कैलकुलेट हो जाएगा निगेटिव में। कैलसी आप अपने पास रखे रहिए, ये गेट कैलकुलेटर से कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो ये हो गया P2 की कंडीशन, रो जी की वैल्यू 9810 रखोगे तो पास्कल में मिल जाएगी P2 की वैल्यू माइनस 53.11 किलो पास्कल विच इज इन गेज प्रेशर मिल रहा है, गॉज भी बोलते हैं, है ना। नाउ देयर इज टू बी कंसीडर द कंट्रोल वॉल्यूम इनक्लोजिंग द सेक्शन। तो वेट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, फ्रस्टन जो शेप बना हुआ है, तो वेट हो जाएगा रो टाइम्स जी टाइम्स फ्रस्टम का एरिया पाई बाई 3 h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस
R1 R2, ये जो है ना आपका फ्रेस्टम है जो आपका कंट्रोल वॉल्यूम में बना रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। सो वेट इज इक्वल टू 9810 मल्टीप्लाई विथ 5/3 इंटू 0.25 स्क्वायर इंटू 0.25 इंटू 0.125 प्लस 0.125 स्क्वायर। The holy cow value is to be over here. Two point 243 kilonewton. Now अब जो है ना मोमेंटम इक्वेशन लेंगे, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन। क्या लेंगे हम? लीनियर मोमेंटम इक्वेशन। जीरो पॉइंट फाइव स्क्वायर प्लस 0.125 प्लस 0.125 स्क्वायर। नाउ मोमेंटम इक्वेशन हो जाएगी लीनियर मोमेंटम एक्स वाई साइन कन्वेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार -w प्लस आर वाई प्लस p1 टाइम्स a1 माइनस p2 टाइम्स a2 इज इक्वल टू रो क्यू p2 minus p1. Put these value -2.243 plus ry plus p1 is equal to 15 15 p2 is equal to -53.11 into pi upon 4 into 0.25 square is equal to 10 cube into 0.5 into 10.185 minus 0.546. Here the final value ry is equal to 0.503 in kilonewton. Right, ये रहा हमारा फाइनल कंडीशन। इजी। चलिए
आपका जो है सेशन इतना ही रखते हैं। आपको एक काम करना है, क्या? आपको पीएम क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करना है। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से हमारी कामना है। थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।